leave from the meeting, I would like to request you to please join again. Okay. So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening from my side. And I'm really hoping that you all are really well. This is Mohammed Danial Kamal. I'm the Secretary SDGs at the Buraaq Association, and along with this, I'm playing my role as the co-founder for READ Resilience and Adaptation. As we all know that we started our trainings on how the youth of Pakistan can go into the future COPs of either United Nations Framework Convention to combat desertification, United Nations Convention on Biological Diversity, or United Nations Framework Convention on Climate Change. So these are the three main UN secretariats, though that are responsible for conserving the environment and protecting the humanity along with the planet Earth. And these three secretariats hold a very special position in terms of the calls, in terms of the declarations, in terms of the agreements, or in terms of the protocols. And for this, we just decided to organize a youth climate negotiator training where you guys, as being the future representatives of Pakistan, can represent our nation, can represent our country along with the other nations at such international global forums. And yesterday, we just had a session with our trainer, Dr. Nazakatul Hasnan, on the topic of climate diplomacy and how United Nations Framework Convention on Climate Change really works. We discussed some very key topics like how there's the history of protocols. We discussed Kyoto Protocol. We discussed, apart from Kyoto Protocol, mainly the birth of Paris Agreement. And also we discussed how the climate diplomacy really works at such global forums. And today I have such two esteemed and one of my favorite, you can say nation that is having and that is really working to conserve the environment. I have my two guest speakers and I have my two guest trainers, and they are responsible to teach you, they're responsible to guide you on how you can represent, on how you can work to get into the COPs and you can represent our nation, Pakistan. So I would like to welcome my very two esteemed guest trainers. Please, I would like to welcome Miss Birungi Sarah and Miss Katsumi Jacqueline. They both are from Uganda. They both represented the nation of Uganda at the United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD COP16, that happened in Riyadh, Saudi Arabia in the last December. And yeah, we really met, if I would like to say, we really met on the side event that was organized by the Brazilian ministry, and that side event really focused on how the Brazilian Ministry of Education and the Brazilian Ministry of Environment are about to, make the proceedings, are about to make the negotiations so that they can make the COP30 successful. And it's like been a year and we are seeing some really good success. So if I would like to just tell you the success, and then I would like to welcome our trainers. So the current news regarding the COP30 is like Mr. Simon Steele, who is the Executive Secretary at the United Nations Climate Change. He just said that we as the United Nations have enhanced our transparency network and has enhanced the transparency framework network. We are really focusing more, and along with this, apart from this, he said like approximately, if I'm not wrong, he said around 118 parties, and by parties I mean to say nations, have presented their biennial transparency reports that we say BTRs. And apart from those 118 parties, there are 44 parties also, apart from those 118 parties, who have completed technical expert reviews. And also this COP usually marks the very first thing. This COP usually marks the very first sessions, though that were completed on the facilitative multilateral consideration of progress. And this all was said by Mr. Simon Steele, who is the Executive Secretary at the United Nations Framework Convention to Climate Change. If I talk about the gender and climate change wing, the thematic area, I would like to say like
the women thematic area, the gender thematic area has said that climate action needs business action. Women are more likely, women are 2.5 times more likely responsible to act on climate change. They are the building solutions of energy transition. And also, if I would like to say, the United Nations agency, UNECE, has focused on two major issues, the water cooperation and the transport. And they are advancing their efforts to implement their decarbonization strategy for inland transport that has been adopted in 2024. And also, if I would like to say, there is one more major thing that has been done till now in this COP30, and that is their call to action on integrated fire management and wildfire resilience. So this is a shared commitment. They have reinforced this call so that we can scale up the integrated fire management process. And the and by they I mean to say United Nations Framework Convention on Climate Change, the UNFCCC has said like this IFM, integrated fire management, is a holistic and adaptive approach. It is is based as a transformative means to reduce wildfire risks, and we are really enhancing efforts towards reversing the deforestation, reversing the degradation by 2030. So I was really studying this, and majority, I would like to say, like they have focused on three major sectors. They have said there should be inclusive and adaptive fire governance strategies, but these strategies should include north-south, south-south, and triangular cooperation. So this is one of the most important things that I would like to discuss with all of you. And yeah, so I would like to now give this stage to Ms. Birungisara and Ms. Katsumi Jacqueline so that they can guide you on how there are actors, there are stakeholders at such COPs. What types of stakeholders, what are the actors involved at such COPs that with which you are going to deal with? So over to you guys. Hello, good evening, good morning, team. Greetings from Uganda. I'm called Birungisara. I have my colleague here. She will introduce herself. She is Katsumi Jacqueline. Thank you, my friend Daniela, for this platform, and I welcome you all. Yes. The next slide. We are having the youth participation in the COPs. I think I'm right. And Sarah, just when you want to change the slide, just say next slide. I will be changing the slides. Oh, okay. Thank you. Yes, the first slide saying what is a COP. Yes, if you need to get involved in this UNCCD, UN processes, you need to know what the COP is, the Conference of the Parties. It is the highest decision-making body of an international environmental convention. In this case, under the United Nations Convention to combat desertification, the COP brings together all countries. So when all these countries come together, these are called the parties. That's where you're seeing the parties coming from that have ratified the convention. This COP, it oversees implementation, reviews progress, they set priorities, and adopts decisions. This guide global effects on land restoration, the drought resilience, and sustainable land management. So COPs are the conferences of the parties, are the official annual meetings of countries that have signed international climate agreements, such as the UNFCCC
and in full it is the United Nations Framework Convention on Climate Change. They bring together governments, as my friend Danilo said. From the beginning, I heard from his introduction, I met him at the Brazilian pavilion when they were discussing how they are going to hold these negotiations in COP30, which is going on. So in this, the COPs, they bring together governments, they bring together civil society organizations, the youth, the scientists, private sector, activists, to negotiate and decide the global climate action. At COPs, countries review progress, they set commitments, they mobilize finances, strengthen strategies for mitigation, adaptation and climate resilience. Daniel, next slide. We are seeing the types of COPs. There are very many, but mostly there are a few that you need to focus on. One is UNCCD, which is the United Nations Convention to combat the desertification. The one that happened in Riyadh, Saudi Arabia, where I met Daniel. And their focus, the UNFCCC, they focus on land degradation, drought, and desertification. And this was adopted in 1994. And its purpose is, as I said, it is combat desertification. They mitigate the effects of drought, protect sustainable land management, restore degraded land and ecosystems. The next one is UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. And they are focusing on climate. This was adopted in 1992 with the purpose to stabilize green emissions, reduce global warming, support climate adaptation and mitigation, strengthen global climate policy through COP's Conference of the Parties. Next slide. How many types of actors are in COPs? So when you're attending COPs, you'll be seeing different actors. They are coming from different, I can say, backgrounds, or like you're attending a conference, but you're in divisions. One is from civil society, another one is from the youth department, another one is from government. You're working with government. You also take part in these COPs. So we are going to look at the four major actors. One is the parties, the member states. These are the countries that have ratified the UNFCCC, the Kyoto Protocol, or Paris Agreement. They are the main decision makers and negotiators. We also look at the observer states. And these states, they are countries or entities that are not parties, but are permitted to attend as observers. So they are giving examples like Holy See, Palestine before recognition. There are very many. And we're also going to look at the other actors. These are the intergovernmental organizations. They include UN agencies. Here you will look at UNP, UNDP, World Health Organization, FAO. These are under the international organizations, the examples I'm giving. So we are going to see the regional bodies. This is they include the African Union and European Union. The multilateral development banks, like the World Bank, AFDB, they contribute technical and financial expertise.
So these are the ones which are under the international, rather intergovernmental organizations. Next slide. The first one is non-government organizations, NGOs in multiple constituencies. Here we look at environmental NGOs. These are under the non-government organizations. The environmental NGOs, the youth, indigenous people, women and gender. We'll look at business and industry, having the farmers, research and independent NGOs, trade unions, local governments, and municipal authorities. Under here, we also have the faith-based groups. Next slide. What are the main agenda youth discuss with actors? Strong climate ambition. Here, the youth push for governments and industry actors to increase NDC ambition, nationally determined contributions. They commit to 1.5 degrees centigrade pathways. Phase out fossil fuels. We are having coal, oil, and gas. Transition to renewable energy. So that's why you're seeing the youth will live longest with the consequences of delayed action. We're having the youth accessible climate finance. Youth emphasize accessible climate finance, funding for loss or damage for vulnerable countries, transparency in how climate money is allocated, including youth in green climate fund related programs. That's why many youth-led initiatives lack resources, even though they drive local adaptation and mitigation. Next slide. We're having the adaptation and climate community resilience. The youth highlight nature-based solutions. Here they engage in tree planting, restoration, agroecology, community resilience innovations, youth involved in national adaptation plans, NPs, climate and health linkages. That's why the young people are often the first responders in climate-affected communities. We're having the climate education, a major priority, integrating climate education into school curriculum, developing green skills for youth employment, supporting climate education policies globally, promoting youth climate literacy. That's why the education empowers future generations and drives behavior change. Next slide. Okay, intergenerational and climate justice. The youth demand fair representation of children and youth in negotiations. Protections from vulnerable youth. Here we are talking about the girls, rural youth, refugees, IDEPs. Climate policies that protect human rights. The climate change disproportionately affects young people and marginalized communities. So that's why we call upon the youth to engage so that they fight for the rights of these people, the vulnerable, like the women and the youth. We're having meaningful youth participation and decision making. Youth advocate for more seats for youth in the national delegations,
meaningful consultations, not tokenism, youth-led recommendations in negotiation texts, inclusion in technology, finance adaptation, and mechanisms. So decisions that could affect the future of young generation. So what we are seeing when you participate in COPs, these are things that you need to be engaged in. You need to request for more seats of the youth in national delegations. You participate in meaningful consultations because there are many pavilions, there are many people from different areas. So you take part and you demand for the rights of the young people. When you're participating in a COP, you are not there as a person. Assume you are from Pakistan, meaning you're leading the many youth, 1,000 youth in Pakistan. So that's why you demand for the rights of other people that will be represented. So decisions that could affect the future of a young generation. So it depends on how you negotiate that other youth can benefit from your participation. Next slide. We are looking at green jobs and a just transition. Youth discuss with governments and private sector. There's job creation in renewable energy, conservation, and green tech. Skills development and training programs, ensuring a just transition for youth workers. That's why the green transition must create opportunities, not unemployment. We will look at nature, biodiversity, and food security. Youth highlight forest conservation, climate smart agriculture, sustainable food system, and food security. Land rights for communities and indigenous youth. That's why biodiversity is crucial for climate resilience. Next slide. We are looking at climate and health. The youth raise climate impacts on mental health and well-being. Disease outbreaks linked to climate change, heat stress, air pollution, and water scarcity impacts on youth. That's why youth health is increasingly at risk due to extreme climate events. We are looking at children's rights and safety, especially through the Children and Youth Pavilion. Youth advocate for recognition of children's rights in climate agreements, protection from climate-related disasters, funding for child-sensitive adaptation and programs. Thank you. My friend, I would like to invite my co-friend so that she can also add on. Thank you so much. Next slide. Yeah. Hello, how are you, Tim? Yeah, I'm Katsime Jacqueline, and I've been doing this work together. Thank you so much, Tim, leader, for this platform. God bless you. Yeah, as I continue from my friend where she has stopped, yeah, how decisions are made. Yeah, during these COPs, the different parties they meet and they have to look at different decisions and how those decisions are made. Yeah, we have some points down. Decision making at COPs follows a structured negotiation-based process. There is consensus. Most decision okay. Yeah, consensus. Most decisions must be agreed on by all parties or countries. This often requires long negotiations and promises. The thematic working groups.
Countries negotiate in groups focusing on issues such as finance, adaptation, loss and damage, technology, and capacity building. For example, in these meetings, there are different organizations that meet. They have to discuss about finance, adaptation, and they come with what they have decided on. Then draft texts. Negotiation develop draft decision texts, which are revised multiple times before approval. High-level segments, ministers and head of state join in the final days to finalize political decisions. Formal adoption decisions are adopted in plenary sessions and become part of the official COP outcomes. Yeah, we are encouraging youth to be part of these COPs because during those sessions, yeah, there are different things that we have to learn, and we need these best practices from other people that we can also take to our countries. Thank you. Next slide. How youth can meaningfully participate, influence, and network. Young youth engagement can be powerful and take several forms. YouthYob, the official youth constituency of the UNFCCC that coordinates youth advocacy, drafts policy positions, and leads events like the Conference of Youth, COI. Participate in negotiations. Youth can observe sessions, deliver statements, comment on draft text, and push for strong commitments. Organize or speak at side events. Present innovations, research, and community solutions. Network strategically. Connect with government delegates, NGOs, researchers, and activists to build partnerships and increase visibility. Advocate through campaign, lead or join global youth movements to demand ambitions and climate action. Engage with national delegation, join country delegations, or collaborate with ministries to represent youth voices. Next slide. Next slide. Yeah, we are encouraging youth to participate in these groups because it is one way of bringing visibility for your country, for your organizations, and it is also helpful because you are working as ambassadors of the rest. There are many youth in the communities who doesn't have such access to be part of to get chance to attend in these groups. So the moment you get a chance, make sure that you be a voice of the voiceless. Yeah, next slide. Next slide. Yeah, as we are waiting for the presentation, team leader. I'm so sorry, guys, for leaving at such time. Actually, here in China, it's a bit difficult and we have to use VPN. So that's why I just reconnected. And yes, here we are. Please continue, guys. Thank you. Oh, okay, thank you. Yeah, next slide. Yeah, how to turn COP experiences into sustained climate and land action afterwards. To make COP experience impactful, share knowledge, conduct community dialogue awareness campaigns or workshops to simplify and disseminate lessons learned. Make sure that when you get that chance, try to put it in action and get information, conduct community dialogues where you have to share experience from those other leaders, other youths who have not gotten a chance to be part of the COP. Yeah, develop follow-up initiatives,
create and strengthen local climate action projects such as tree planting, clean energy adaptation, land restoration, or climate education. Then influence policy at home, engage local leaders or ministries, contribute to national climate plans, NAPs, NDCs, and advocate for youth inclusion. Strengthen networks, use the connections built at COP to collaborate on grants, research, or youth-led climate programs. Monitor commitments. Track whether national and global commitments made at COP are implemented and hold leaders accountable. Leverage opportunities, use COP experience to apply for fellowships, funding your young platforms, climate innovation programs, or leadership roles. Next slide. Yeah, how often COP meets or who attends? Frequency, the UNCCD COP meets every 2 years. Who attends? Parties, national government, ministers, negotiators, technical experts, observers, UN agencies, international organizations, civil society organizations, CSOs, including NGOs and community-based organizations, youth groups and networks, often coordinated through the Youth Caucus, scientists and experts, especially through the science policy interface. Then private sector and development partners. Yeah. Next. Yeah, structure of the COP. A typical UNCCD COP has several key components. Plenary sessions, as we told you in the COP, there are different meetings that you are supposed to engage in. There are side events, there are the meetings that you are supposed to attend as a youth so that you can get that information, that knowledge, the experience from other people, best practices, then you take it back to your home. Yeah, there's a plenary session, the formal high-level meeting space where countries make statements, present progress, and adopt decisions. Then committee or working groups. Small negotiation rooms where detailed discussions happen. Examples include Committee of the War, COW, Committee for the Review of the Implementation of the Convention, then specialized contact groups, then side events organized by government, CSOs, UN agencies, youth groups, and experts to share knowledge, launch reports, and discuss innovations. Then exhibitions and pavilions, spaces for countries and organizations showcase projects, technologies, and partnerships. Yeah, here we are also encouraging youth from different countries. Yeah, the moment you happen to attend a COP, you make sure that you attend different committees, different meetings, and also you visit different pavilions where you will get different knowledge and you understand the best practices so that you can take them back to your country, and you also bring the visibility of your country. Next slide. Yeah, role of COP presidency and secretariat. COP presidency held by the country hosting the COP. Yeah, when you see that the COP is going to happen in Pakistan, the president will be responsible. He's the one who presides over the COP. Actually, he's an opening ceremony. He's the one who takes. Then there is provide political leadership, guides negotiation processes, and sets the thematic focus for that COP. Chairs plenaries and high-level segments. Yeah, that is the president of the country that is going to host a COP. Yeah, then UNCCD Secretariat provides technical, administrative, and logistical support.
prepares reports, drafts documentation, supports negotiations, and ensures implementation of COP decisions, coordinates with partners, and observers before, during, after the COP. Yeah, during the COP, the UNCCD, the president that are hosting the COP, they're always in good coordination. They coordinate, and the moment you find yourself there, the place you find it is really feeling home. That is good. Next slide. Yeah, outcome of a COP. A UNCCD COP typically produces decisions, formal negotiated outcomes that guide action on land restoration, drought policy, finance, monitoring, reporting, and implementation. Yeah, then declarations, high-level political messages, for example, ministerial declarations, committing countries to share goals. Then partnerships and initiatives, launch of new programs of collaborations, often linking governments, UN agencies, CSOs, youth networks, and the private sector. Next slide. Yeah, thank you so much for your time, for listening. Yeah, thanks so much. And team leader, we really appreciate. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much, everyone. And I would like to thank you both because it's really a great thing that you really gave your time at such uh, you can say necessary moment. And guys, if you have any question, just feel free to ask the questions from our trainers. They are here to guide you. And also, Sarah and Jacqueline, please tell us about WANO, the organization in which you work. You haven't told us. We are really intrigued by the work that you are performing. Thank you. Thank you so much. My name is Birunjisa. Let me introduce myself well once again. Birunjisa is my name. I work with Top Notch Community Development Initiative. I work as a project coordinator. And here is my colleague. She can introduce herself. Yeah, thank you so much. I'm very sorry we forgot to, to complete our introduction. Yeah, once again, I'm Katsime Jacqueline, and I work as a program manager, Top Notch Community Development Initiative. It is located in Wakiso, Naruvule Hoima Road, Wakiso District, Kampala, Uganda. Yeah, thank you so much. Okay, thank you so much. So, guys, if you have any question regarding the UNCCD, regarding the proceedings of how UNCCD really works, or how you can get into COPs, please feel free to ask your questions from our trainers. I would encourage all of you to please just raise your hand, open your mic, and ask your questions from our trainers, or just simply type in the chat box about your questions. And it would be good, like particularly apart from focusing on the UNFCCC COP, you should also focus on the UNCCD. In fact, there should be a question like on how UNCCD really works, what UNCCD really aims for, what are the aims, what are the goals of UNCCD. You can ask these questions from our two trainers because they are the specialists of UNCCD. Their work is on under the UNCCD. Okay, so guys, we have a question. It's from Mr. Jahanzeeb Hassan. He is asking, what are the biggest gaps between the commitments made at last COP and the actions actually taken? The biggest gaps at our commitments that we usually make at COPs and the actions that we actually take. Over to you. Sarah, Jacqueline, are you there? Okay, thank you. I think
I don't know whether I've got your question very well, but I heard that how UNCCD works. Am I right? No, Sarah, it's like there is a question from Mr. Jahandev Hassan. He is asking, what are the biggest gaps between the commitments that are made at COP and the actions that we actually take after the commitments that we make at COPs? So the biggest gaps where we are lagging at fulfilling or commitments that we really make at COP. Okay. Can we answer one by one, or we wait for all the questions, then we will take them at once? You can answer this question, and the rest, if there will be any question, they can just type in the chat box. Okay. Yes, the gaps in the commitments. I can start with the weak implementation of national action plans. Even though most countries have these national action plans, many of them are not funded. And you are aware when something is not funded, the implementation becomes very difficult. Others are not integrated into national development plans, and this makes follow-up very difficult. Yes, we are having also limited financing for land restoration. And under UNCCD, we see that countries struggle to meet commitments because restoration projects are expensive. National budgets for land restoration are very small, and the private sector funding is still low. Yes, we also see the low capacity for monitoring land degradation, where many countries lack strong data systems, trained technical staff, tools to measure progress toward land degradation neutrality, and this leads to delayed in reporting. We also look at, we see the weak drought preparedness because of the climate change and the effects of the human practices. We can't prepare when drought is coming. So although COP decisions require building drought-resistant frameworks, gaps still exist, like no early warning systems, poor coordination between sectors. We are having water, climate, and environment. So these sectors are not coordinated, and it becomes preparedness for drought very difficult. We also look at limited community level drought planning. Yes, there are very many, but we also look at the poor coordination across government agencies. Land issues touch many ministries. When we are talking about this, we look at agriculture, we look at water, we look at the environment, the local government, finance, but most countries often lack one strong coordinating mechanism, leading to duplication, slow implementation, and incomplete data. We also see limited community engagement. Many commitments emphasize gender-responsive actions, youth involvement, indigenous knowledge, community participation, but in reality, participation remains weak due to poor mobilization, limited awareness, and low capacity of local structures, few incentives for community monitoring. So we look at this, when we look at limited community engagement, that's why we are saying the youth, we see the involvement of youth is still low. That's why we encourage many countries, many youth to get involved in this. They demand for their rights, or they participate in this negotiation so that the problems can be limited. Yes, we look at the weak integration of land restoration in the budgeting. Many commitments that could require mainstreaming into national budgets, development plans, and district plans. But most countries, when we look at them, they still treat land issues as a sector problem, not a national priority. And we see this is still a big gap. We're having the insufficient private sector engagement.
The private sector is needed for large-scale land restoration. Gaps include we are looking at the lack of incentives. We see no clear investment frameworks. Also, the low awareness of natural-based solutions. Yes, that is also a challenge. We look at the reporting challenges. Countries often delay or skip reporting due to poor data collection. I had already mentioned about that. The low capacity of ministries, lack of coordination with districts. There is no coordination between these different sectors. And this affects transparency, access to international funding, tracking of commitments. Yes, I can add there's this climate land integration gap. Land degradation is linked to climate change, but UNCCD commitments are not fully integrated into NCDC's climate commitments. Drought issues are not strong in climate policies. We get another point of the youth and gender commitments not fully implemented. Although COP decisions highlight youth engagement, youth women leadership participation remains minimal. There are no structural mentorship programs. Youth are not funded to attend COPs. Gender policies remain on paper. So like how we said, the youth engagement, when the youth are, they may find they're interested in attending COPs, but funding for them becomes a challenge, and their issues, they remain unattended to. I think we can take those ones. Yeah, then also there is, I had a question about how UNCCD works. Not so? Yeah, UNCCC works by uniting communities, providing scientific guidance, mobilizing funding, and driving national action to protect land and prevent desertification. Yeah, UNCCD, it is a body, and it also supports those who are willing to take part in these groups. Yeah, the processes, how it works. The moment the coup is going to happen, we normally have to write concepts, and the concepts, the moment they go through, if you write a concept and it goes through, then you have to look for the sponsor, or sometimes UNCCD also, it can also support. Yeah, UNCCD, it also works through national action programs. For example, every member country, they create a national action program which explains how they protect the environment, which explains how they will manage water sustainability, which explains how they will prevent desertification. Also, there is also funding and support. This UNCCD, itself also is directed fund project. As I said, they support. The moment your concept goes through, they can support the person, they can support an organization that is going to attend the COP. Also, there is a drought management. The UNCCD also coordinates global drought, early warning systems, and supports countries in assessing drought risks, preparing drought plans, and managing water more sustainability. Yeah, also there is land degradation. UNCCD also, this is a major initiative goal. By 2030, countries should ensure no net loss of healthy land. Yeah, for example, they also mean restoring degraded land, preventing new degradation, sustaining, managing existing land. Yeah, in this also there is conferences and decision making. In UNCCD, every 2 years, all countries meet at the COP, Conference of the Parties. They review progress, adopt new decisions, adjust strategies based on scientific recommendation. Then also there is this point of where there is implementation on the ground.
countries work with different categories of people, the NGOs, the environmental agencies, the local communities, the farmers for food security. And projects that may include reforestation, soil erosion, soil restoration, sustainable agriculture, water harvesting. That's it. But in short, UNCCD, it works by uniting communities, providing scientific guidance and mobilizing funding and driving national action. Thank you so much. Thank you so much, my friends. Actually, we have one more question, and this is a question from Ms. Ikra Parveen. She is asking, how much real implementation initiatives committed in the last COP, and what are the current updates on those? How much we achieved? So basically, she wants to know the progress of the initiatives that we made either in the UNCCD COP16 that you guys attended, or if you were following the UNFCCC COP. So she just wants to know the initiatives that we made and what's the current progress on those initiatives. How far? How, like, is our progress stagnant? Is our progress growing constantly, or it's like going down? So this is the question. And I would like to know your point of views on those projects. Guys, are you there? Excuse me, repeat the question. Okay, so Jacqueline, basically the question from Ms. Ikra, she is asking what initiatives were planned at the UNCCD COP16 that really the United Nations made, and what is the progress on those initiatives? And if you guys were following the UNFCCC COP29 that happened in Baku, Azerbaijan, so if some of those initiatives were made in COP29, so till now, how many, projects are completed? So, Ms. Ikra, regarding the UNFCCC, I can answer your question, but for the UNCCD, let's just take the viewpoints from our trainers. So, Jacqueline, over to you. Sarah, over to you. She just wants to know the initiatives that were planned at the COP16, the progress on those initiatives. How many projects have been completed? How many are underway? And how many are in the pipeline? Okay, thank you so much. And the UNCCD, there are different initiatives. For example, there is a strong drought preparedness and early warning systems, whereby it encourages the community, other countries, that should have to monitor drought monitoring systems, early warning alerts, and national drought action plans. The UNCCD, it needs to expand real-time drought forecasting, support drought resilient agriculture, whereby these communities that it was found out that drought is affecting most of them, and that's why you find in most families there is too much famine. So, and they are supporting these communities to have drought resilience agriculture, improve water management and storage. Also in this drought, we found out like that there is this problem of deforestation, and we are encouraged, as top notch, we are encouraging communities to, there is this model, PHE, that is population health and environment, whereby we are encouraging communities to have wood roads where they will not tamper with the forest, cutting the trees. Instead, they will have to use these wood roads for simple firewood, not degrading not encroaching the environment, that will later bring in this problem of drought. And it is being implemented well, and the communities are picking up. There is also water smart agriculture initiative, because whereby dry lands lose productivity fastest. UNCDD encourages irrigation efficiency
and also rainwater harvesting, climate smarting farming, drought talented crop development. UNCCD is encouraging these communities and even different organizations that are getting this, they have this chance of reaching deep in communities to encourage members to have this irrigation efficiency. Then also this climate smart farming. There's also community and indigenous land rights, whereby local and indigenous communities protect land better than any policy. So UNCCD needs stronger initiatives to secure land tenure, promote traditional land stewardships, and support pastoral livelihood systems. Also in addition to that, there is also increased farming and climate finance. One of the biggest needs UNCCD needs occurs. There is more financing for land restoration, easier access for low-income countries, partnerships with the private sector. Because it was proved out that these communities, they can't manage to implement these activities alone. So we need partnerships so that we can fight together these issues that are affecting the communities. Then there is also sustainable agriculture and food system reforms, whereby UNCCD, it is encouraging regenerative agriculture, no-till farming, agroecology, reducing overgrazing, because this also it is affecting the land and making the environment being a problem to most of us. Then also there is the education, youth, and awareness initiative, whereby UNCCD, it is encouraging young youth to get more involved in these programs, because youth involvement in land restoration is being looked at as a big activity, rather a big issue, that once these youth are involved, they are young generations of tomorrow. They can help in managing this degradation or environmental issues that are coming up. Then environmental education, community awareness campaigns. Thank you so much. Thank you so much, guys. Also, there are two more questions. Like, there is a question from, once again, Mr. Jahazev. He's asking, what emerging issues do you think will shape the agenda of future COP meetings, and how can educators like you guys translate complex international negotiations into actionable insights for students? Come again? He's asking, what are the emerging issues that we will more likely see in the coming COP17 of UNCCD in Mongolia? Also, what is the solution? What is the way for us, the educators, to translate those complex negotiations into simple language, into simple material for the youth? Okay. And the emerging issues, what we can say, it is mostly on climate change, whereby every country is crying because of the climate issue. So we are requesting there is youth leadership and integrated. There is youth leadership and international equity, whereby youth are no longer just observers, they are becoming negotiators, advisors, and technical experts. And it is also advised that it needs the moment. Why it matters for educators, we need to train youth in negotiation basics, unit skills in policy writing, diplomacy, and advocacy, because this will help them to have an exposure and get much knowledge about these COPs. There is also climate finance transparency and accountability. Countries are debating how much finance is delivered, who receives it,
where the money is new or and in additional. Then for educators, teach students how climate finance works. Use case studies, loss and damage green climate fund. So as we leaders, and mostly targeting the youth, we need them to be educated, to be the change makers of tomorrow. Then there's loss and damage. This is becoming a major agenda compensating countries affected by the climate disasters. Therefore, for educators, explain how communities can document climate impacts. Teach youth how to engage in national loss and damage committees. Train on storytelling and evidence collection, and also not forgetting documentation, because we know people they normally consider things that are in action, but they forget about documenting. Then there is nature-based solutions and land restoration. Therefore, COP16, it emphasized land restoration future COPs with push, whereby it encourages regreening dry lands, community restoration, nature-based solutions, and in short, for the educators, teach students about local ecosystems, whereby we, as top notch, we are encouraging PHE model to be on top, because it carries everything about environment, and also it also has solutions for environment. Then there is also climate and health issue that was also being a problem, and as leaders who are encouraging youth to get involved in these issues, to be among the COP delegates, we need them also to take participation, to be participative. Yeah, then also there is I think how educators can translate COP's negotiations into actionable student sites. Yeah, we simply process with the clear narrative. We support these youth in global problem solving meetings. Break down who participates and why. So they should know, why are they attending COP? What are they going to benefit? And after benefiting this COP, what are they going to help their country? What are they going to bring on the table? And what are they going to help? What are they going to do for their communities? Because they are going as ambassadors. Yeah. Then also there's use Leo world class, whereby students understand better through drought impacts in local communities, extreme weather events, restoration projects, indigenous land management. So as leaders who are also feeling the pain of our countries, and we need young generation to take part, we encourage them to be ambassadors of the risk. Thank you. Thank you so much, guys. Okay, if you have any questions, let me just see if there are questions. Otherwise, no. So then we can, yeah. So there's no such questions. Okay, I guess this is just enough for the questions, and I would like to once again thank you to our esteemed two speakers for giving us your time. And I know it was very difficult for you guys to come here at such times. Participants, I would like to tell all of you that Miss Sarah and the colleague Miss Jacqueline really lost her relative. So may the soul rest in peace. And I'm so sorry for the loss that you both had to go from. So may the God always bless you guys. And thank you so much for giving us your time. We really look forward to seeing you in the future initiatives to bless us with your knowledge. And yes, we want to see you in the future COP of UNCCD COP 17 that is going to happen in Mongolia. And thank you so much for your time.
Thank you so much, guys. And please, Okay. thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for hosting us. Bye-bye. Bye bye. Take care. Bye bye. ओके सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मुझे बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, you can speak if you want to speak. Okay. So just give me a minute and then I will get back to all of your questions. And yes, I will get back to some of the good news on how you can, make your way for the COP that is going to happen in the next year. And there are actually 3 COPs that are going to happen. So, you have to make your target in which COP do you want to go. So let me just, type in the group to rejoin and they can also gain benefit. एंड अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा अब UNFCCC के बारे में कि क्या कौन कौन सी इनिशिएटिव्स अभी चल रही हैं, किस तरीके से भी हमारे पास लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर काम हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड हम लोग किस तरीके से GGA को देख रहे हैं, एंड बाय GGA आई मीन टू से ग्लोबल गोल और एडेप्टेशन, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ। सो दिस इज द थिंग, क्योंकि आप लोग वो वाले सवाल मेरे से कर सकते हैं बिकॉज हमारे जो ट्रेनर्स थे वो स्पेशलिस्ट थे UNCCD के। UNCCD हमारे पास एक और विंग है यूनाइटेड नेशंस का, और जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड मैनेजमेंट के लिए, आपके लिए डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, डिग्रेडेशन को कम करने के लिए और ड्राउट की रिजिलियंस के लिए। सो दिस इज द थिंग, and it was really difficult for our trainers to present at this day at this time because हाल ही में कल रात उनके एक रिलेटिव की डेथ हो चुकी थी, so they had to go back to their village and they have to come back for the presentation, so that's why it was difficult for them to join and to engage with all of you, but kudos to them, they really maintained. Okay, so if I am not wrong, हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के अंदर टोटल 3 कॉप्स होती हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे पास टोटल 3 मेन बॉडीज हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास UNFCCC, एक है हमारे पास UNCBD और एक है हमारे पास UNCCD। UNFCCC हमारे पास मेनली फोकस करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और एमिशंस के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास बात कर रहे होते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर। UNCCD का मैंने आपको भी बता दिया था, और जो हमारे पास लास्ट है वो है UNCBD, जो कि हमारे पास फोकस कर रही होती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, किस तरीके से हमारे पास जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है हम उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको आपके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारी कंट्रीज के अंदर, हमारी नेशंस के अंदर, चाहे वो हमारे पास नेशनल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो हमारे पास लोकल लेवल के ऊपर हो, या चाहे वो हमारे पास रीजनल लेवल के ऊपर हो। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉप्स हैं या हमारे पास 3 ही सेक्रेटेरिएट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कि इन्वायरमेंट से बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास टोटल यूनाइटेड नेशंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 ऐसी बॉडीज हैं जो कि एक तरीके से इन्वायरमेंट से बिल वास्ता या बिला वास्ता अपना ताल्लुक रखती हैं, एंड वो इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर्ली काम कर रही होती हैं, इन अ सेंस के वो क्लाइमेट चेंज को देखेंगे, वो आपके एनिमल्स को देखेंगे, वो प्लांट्स को देखेंगे, वो वाटर को देखेंगे, वो मरकरी को देख सकते हैं, मरकरी की जो हमारे पास कंटेमिनेशन हो रही होती है, चाहे वो हमारे पास सॉइल के अंदर हो, चाहे वो हमारे पास वाटर के अंदर हो, चाहे वो हमारे पास हमारी एयर के अंदर हो, वो एक तरीके से हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स को देख सकते हैं। सो ये जो हमारे पास सारी की सारी क्रॉप्स हैं, इसका मतलब ये है कि इनका भी किसी ना किसी तरीके से इन्वायरमेंट से ताल्लुक है, लेकिन इनके लिए जो बॉडीज होती हैं, इनके लिए जो हमारे पास आपके इनकी जो पजीराई होती है, ये पजीराई उसको इसको इतनी ज्यादा नहीं मिलती
एज कम्पेयर टू और दीज 3 कॉप्स। सो ये है हमारे पास। अगर मैं आपको वैसे कहूँ तो हमारे पास जो पेरेंट कॉप्स हैं वो हमारे पास ये 3 हैं, लेकिन इनके साथ जो इनकी डॉटर कॉप्स आती हैं वो अलग अहमियत की हामिल है, लेकिन उनकी अहमियत भी अलग तरीके से है एंड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उनके अंदर हमारे पास बहुत कम ऑडियंस देखने को मिलती है, लेकिन वो कॉप्स भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। एंड इस साल हमारे पास जो बेशक अभी हमारे पास क्लाइमेट चेंज के अंदर एक ही कॉप हुई थी UNFCCC के अंडर, लेकिन UNFCCC के अलावा भी हमारे पास एक कॉप अभी होने को जा रही है नवंबर 24 से, जो कि चलेगी टिल नवंबर 5। फिर हमारे पास दिसंबर 1 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर 1 से दिसंबर 5 तक हमारे पास यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल असेंबली, जो कि इन्वायरमेंट की डोमेन के अंदर यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी आप कह लें बॉडी है जो कि गवर्न कर रही होती है, उसका एक सेशन होने जा रहा है। वो भी 5 दिनों के लिए होगा। वो होगा नायरोबी कीनिया के अंदर, जहाँ पे हमारे पास UNEP का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। तो जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हमारे पास एक कॉप के अंदर सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंसी की। कॉप प्रेसिडेंसी होती क्या है? कॉप प्रेसिडेंसी हमारे पास वो प्रेसिडेंसी होती है जो कि UNFCCC का सेक्रेटेरिएट देता है एक कंट्री को, कि उस कंट्री को ये इख्तियार है कि वो अपनी गवर्नमेंट में से किसी भी एक पर्सन को ये इख्तियार दे देगा कि आप इस कॉप के लिए, लेट्स सपोज कॉप 35 के लिए, कॉप 34 के लिए आप इस कॉप के प्रेसिडेंट कहलाओगे। आप एक तरीके से अपने अंडर अपनी टीम बनाओगे जो कि UNFCCC, UNCBD, UNCCD, बीट एनी सेक्रेटेरिएट उसके साथ कांटेक्ट में रहेगा एंड उसे गाहे बगाए अपडेट करता रहेगा, इन्फॉर्म करता रहेगा कि हमारे कंट्री के अंदर कॉप के लिए ये चल रहा है, हम ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हमने ये वाला वेन्यू सिलेक्ट कर लिया, हम इस तरीके से डेलीगेट्स को बुलाएंगे। एंड ये चीज UNFCCC की कॉप के अंदर हमारे पास पिछले साल से ये देखने को मिल रहा था कि हमारे पास एक और डोमेन आई थी, सॉरी कॉप 28 से गालिबन, जो कि हमारे पास दुबई के अंदर हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, जो कि हमारे पास डोमेन थी हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस का। अब हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस क्या होते हैं? हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस बनने के लिए इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, और बेसिकली जो चैंपियंस बनते हैं उनके अंदर हमारे पास PhD वाले होल्डर्स होते हैं, बिकॉज दे यूजुअली हैव सो मच नॉलेज एंड दे आर नॉट दैट मच एल्डर और नॉट दैट मच यंगर, सो वो मिडिल एज होते हैं। एंड उन हाई लेवल चैंपियंस का काम ये होता है कि उन्होंने एक तरीके से यूथ बॉडीज को, उन्होंने एक तरीके से यूथ मेंबर्स को मोटिवेट करना होता है कि यू हैव टू कम इनटू द कॉप, यू शुड बी लुकिंग इनटू द कॉप, यू शुड बी लर्निंग अबाउट ऑल द कॉप प्रोसीडिंग्स। ये काम होता है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल चैंपियंस का। एंड एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के जो हाई लेवल चैंपियंस होते हैं वो एक तरीके से यूथ बॉडीज को, यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कि कल को अगर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो कि भाई हमारे पास है एंटोनियो गुतेरेस, तो अगर हमारे पास सर एंटोनियो पूछ लेते हैं हमसे कि क्या चल रही पोजीशन यूथ की रिगार्डिंग दिस कॉप, तो हम लोग उनको अपने बारे में बता सके कि ये है यूथ की रिप्रेजेंटेशन, ये है यूथ की हमारे पास क्या कहते हैं उसे, आगाही। ये चीज होगी, कॉप की प्रेसिडेंसी होगी, कॉप की होस्टिंग कंट्री होगी। अब कॉप की होस्टिंग किस तरीके से होती है? हमारे पास 3-4 साल पहले बता दिया जाता है कि ये वाली कॉप जो होगी ये रीजन वाइज होती है। जितनी भी हमारे पास कॉप होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज होती है, वो कॉन्टिनेंट बेस्ड होती है, रीजनल बेस्ड होती है। कि एक जो हमारे पास अभी कॉप होगी, लेट सपोज वो हुई थी लास्ट टाइम हमारे पास ये सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर, उससे पिछली कॉप हुई थी हमारे पास मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर, उससे पिछली जो कॉप हुई थी हमारे पास वो हुई थी आपका इजिप्ट का जो रीजन है, मुझे उसका नाम भूला हुआ है, उस रीजन के अंदर। उससे पहले जो कॉप हुई थी हमारे पास वो हुई थी आपके ये यूके के अंदर। सो ये होती है हमारे पास रीजन बेस्ड। ये हमारे पास लैटिन अमेरिका के अंदर हो सकती है, ये साउथ अमेरिका जो हमारे लैटिन अमेरिका है उसके अंदर हो सकती है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो सकती है, ये एशियन रीजन के अंदर हमारे पास सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, इस रीजन के अंदर हो सकती है। ये रीजन बेस्ड होती है कॉप्स। एंड इनको ये 3 से 4 साल पहले ही UNFCCC डिवाइस कर लेता है कि ये वाली जो कॉप होगी ये रीजन बेस्ड होगी, तो इसके अंदर अब हम इन कंट्रीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि वो बिड करें कि हम अपने कंट्री के अंदर कॉप को लाना चाहते हैं। एंड इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है, एंड बाय ऑप्शन आई मीन टू से कंट्रीज एक दूसरे से कॉप की हम कह रहे हैं प्रेसिडेंसी को छीनने के लिए, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम कॉप को कर रहे हैं, दे यूजुअली बिड अमाउंट। और इसी वजह से कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं ऑप्शन के लिए, जो कि कॉप की प्रेसिडेंसी होती है।
अभी तक इसी वजह से COP31 का वेन्यू डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि ना तुर्की पीछे हट रहा है ना ऑस्ट्रेलिया पीछे हट रहा है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि कॉप हमारी कंट्री के अंदर हो, एंड दोनों का स्टांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शायद अभी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने में इसकी ज्यादा चांसेस है। एक ये बात होगी। उसके बाद एक जो कॉप होती है हमारे पास, उसके दो सेक्शन होते हैं, या उसके अंदर हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लू जोन, एक होता है हमारे पास ग्रीन जोन। ग्रीन जोन आपका एक तरीके से वो जोन होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन आ सकता है, एज दे जस्ट हैव टू रजिस्टर देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स इनटू देयर फोन। आपकी एक जो कॉप होती है उसकी एक 3-4 महीने पहले एक एप्लीकेशन बन जाती है, एंड उसके ऊपर आपको जाके रजिस्टर करना होता है, एंड आपको आपका ग्रीन जोन का कार्ड मिल जाता है। एंड आप उस जोन को, उस कार्ड को दिखाकर अगर आप वेन्यू भी होते हैं, अगर आप उस कंट्री के अंदर होते हैं, उस सिटी के अंदर होते हैं, तो आपको वो कार्ड दिखाकर आप ग्रीन जोन का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ब्लू जोन का जो एक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ब्लू जोन का एक्सेस बेसिकली आपको इस तरीके से मिलता है कि यू हैव टू आइदर रिप्रेजेंट योर कंट्री। रिप्रेजेंट योर कंट्री से मुराद ये है कि आपको आपकी कंट्री की जो मिनिस्टोरियल बॉडी है वो कहेगी कि हम इस पर्सन को भेज रहे हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर, तो आपका नेम एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन MOCC एंड EC पाकिस्तान की जो है वो भेजेगी UNFCCC को, एंड आपकी सारी की सारी वो प्रोसेसिंग कर रहे होंगे पीछे से, एंड आपको जस्ट आपका वीजा लेटर होगा, आपका आपके पास आपका इन्विटेशन लेटर होगा, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा ब्लू जोन के ऊपर। आप जैसे ही वो ब्लू जोन के ऊपर दिखाएंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको आपका कार्ड मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। एंड देन अगर आप कभी भी ब्लू जोन के अंदर जाना होगा अगले आने वाले दिनों के अंदर, आप सिर्फ वो कार्ड दिखाएंगे एंड आपको ब्लू जोन के अंदर एक्सेस मिल जाती है। तो ये चीज होती है ब्लू जोन की और ग्रीन जोन के अंदर डिफरेंस। अब ब्लू जोन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ वो डेलीगेट्स नहीं जाते जो कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ब्लू जोन के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्सेस दी होती है जो उनसे आप कह लें एक्रीडिटेड है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेलीगेट्स को भेज सकती हैं एज ऑब्जर्वर्स के तौर पे, तो हम उनको भी ब्लू जोन का एक्सेस दे सकते हैं। अब आपका काम ये होता है कि शुरुआत में अगर आप कॉप के अंदर जाना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बी गोइंग एज ए डेलीगेट फ्रॉम द मिनिस्टोरियल बॉडी ऑफ अ नेशन। तो आप यूजुअली कॉन्टेक्ट करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि यूनाइटेड नेशन से एक्रेडिटेड है, कि आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको इतने नंबर ऑफ बैजेस मिलते हैं, आपको इतने नंबर ऑफ आप कह रहे हैं एक्रीडेशंस मिलती हैं, तो आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर करें UNFCCC के अंदर। हम आपको भी रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे उस फॉरम के ऊपर। एंड जब वो ऑर्गेनाइजेशन आपको वो एक तरीके से रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपके ऊपर काम डबल हो जाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एज वेल। सो दिस इज द थिंग। और ब्लू जोन के अंदर हमारे पास हाई लेवल सेगमेंट्स होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टोरियल बॉडीज ही जा सकती हैं, और कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर कोई भी जा सकता है जिसके पास वो हमारे पास उसके जिसके पास वो बैज है। लाइक पार्टी डेलीगेट हो सकता है वो, या वो ऑब्जर्वर डेलीगेट हो सकता है। पार्टी डेलीगेट या पार्टी जो हमारे पास कार्ड होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के वो उस बंदे को मिलता है जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से जा रहा होता है, एंड ऑब्जर्वर का जो डेलीगेट होता है या ओवरफ्लो बैच जो होता है वो उस बंदे को मिलता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जा रहा है एज एन ऑब्जर्वर। ये है एक फर्क। एंड पार्टी डेलीगेट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बेसिकली फाइट करना पड़ता है, एंड एक तरीके से ये कहा जा रहा होता है कि यू आर गोइंग ऑन द क्या कहते हैं उसको, basically you are representing the nation of Pakistan, you are representing the ministry of Pakistan, you are representing the ministerial body of Pakistan, and एक तरीके से आप लाइक गवर्नमेंट के खाते के ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर के खाते ऑब्जर्वर का जो हमारे पास आप कह रहे हैं बैच होता है, उसके अंदर यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करना पड़ता है कि आपको वो फंड करें। अब एक सवाल पैदा होता है कि आपको वो फंड क्यों करें, तो बेसिकली यू हैव टू गिव देम अ सॉलिड रीजन टू make them you know to give them that satisfaction कि वो आपको भेजें अपने पैसों के ऊपर कॉप के लिए। तो आप उनको ये भी कह सकते हो कि मैं इधर जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करूंगी, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करूंगा,
और मैं एक तरीके से जो प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आ रहा होगा तो आई विल ऑल्सो पिच दैट ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लुक आफ्टर करें। सो आपको एक तरीके से उनको पिच इन करना होता है एंड आपको एक तरीके से उनसे फंडिंग लेनी होती है। अगर हमारे पास आप कह लें जो बाहर के जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, वो पैसे नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देंगे। बहुत ही कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि पैसे देते हैं एंड अभी हमारी कंट्री की ऐसी डायनेमिक्स है कि जो पैसा नहीं दे सकती। तो बेसिकली काम क्या होता है, काम ये होता है कि वी यूजुअली कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके लिए एक्लेम्ड है। आप उन ऑर्गेनाइजेशन को पिचिंग करते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन राजी हो जाती हैं तो उनको आपको देने के लिए उनको अराउंड $1,000 $2,000 $3,000 देने के लिए वो कुछ नहीं कहते, वो दे देते हैं आपको। एंड वो कभी कभार तो 4,000 $5,000 दे देते हैं आपको। So in that amount usually आप क्या करते हो, आप उस अमाउंट के अंदर अपने प्लेन टिकट्स भी करवा सकते हो, आप उस अमाउंट के अंदर आपको सब्सिडरी एकोमोडेशन भी मिल जाती है। एंड सब्सिडरी एकोमोडेशन से मुराद ये है कि यूएन एक तरीके से जब जैसे जैसे कॉप के दिन करीब आ रहे होते हैं तो वो एकोमोडेशन की प्राइसेस को कम कर देती है, क्योंकि आपको वहां पे जाके रहना भी है एंड अपने खर्चे पे रहना होता है। तो वो सब्सिडी वो एकोमोडेशन की प्राइसेस को सब्सिडाइज कर देती है। तो उस डॉलर की जो आपको फंडिंग मिल रही होती है उसके अंदर यू कैन मैनेज दैट अमाउंट इजीली एंड यू कैन गो एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज वेल। तो ये चीज होता है। आपको ब्लू जोन के अंदर डेलीगेट्स मिलेंगे, मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, आपको ऑब्जर्वर डेलीगेट्स मिलेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, और आपको एक तरीके से उसी कंट्री की प्रेसिडेंसी के हाई लेवल बॉडीज मिलेंगी। आपको ब्लू जोन के अंदर ही एक तरीके से यूएन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज मिलेंगे। आपको एक ही तरीके से उसी ब्लू जोन के अंदर लेट्स सपोज अगर किस्मत अच्छी होती है तो उस UNFCCC UNCBD UNCCD की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज मिलेंगे आपको। वर्ल्ड बैंक की आपको प्रेसिडेंट मिलेंगी, IUCN की डायरेक्टर जनरल मिलेंगे। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आपको हाईली इन्फ्लुएंशियल बंदे मिल सकते हैं एंड यू कैन पिच इन योर प्रोजेक्ट। उनके पास टाइम तो होता नहीं है ज्यादा से ज्यादा, बट in that conversation of 2 to 5 minutes, 2 to 3 minutes, or hardly 1.5 minute or 1 minute, basically you just exchange contacts, and after exchanging the contacts you usually get in contact with them via emails, via the WhatsApp number, and then you usually pitch your project. And एक तरीके से उनके साथ बात करने के लिए सबसे ज्यादा आसान बात ये होती है कि जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि व्हेन आई वेंट फॉर सऊदी, तो एक तरीके से यू ऑल्सो हैव टू ओपन योर क्रिटिकल थिंकिंग। एंड जब आप क्रिटिकल थिंकिंग आप ओपन करते हो तो आप सवालात करते हो, उस सेशन के अंदर आप सवालात करते हो उन बॉडीज से, एंड आफ्टर द सेशन जब आप उन बॉडीज के पास जाते हो तो एक तरीके से उनके जहन के अंदर ये होता है कि दिस इज दैट पर्सन हु क्वेश्चन मी, एंड देन उनसे आपके लिए बात करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, थोड़ा सा इंप्रूव होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा डगमगाता है कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब आप सवालात वगैरह करते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद देम। लेकिन अगर सवालात नहीं भी करते तब भी इट्स ओके, you know, you can just go them, you can greet them and you can say sir or ma'am, it's really a nice pleasure to meet you, and I really like the way you represented your stance, or I really like the way you presented your presentation, so I want to have your contact number. So जब आप उनके साथ लिंक कर देते हो तो आपका प्रोजेक्ट आपको मिलना आसान हो जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जो आपके पास होता है ग्रीन जोन, आपका ग्रीन जोन के अंदर एक्सेस होती है आपके बिजनेस सेक्टर को, आपकी उस कंट्री की आम आवाम को। आप आराम से अपने उस ब्लू जोन के कार्ड के साथ भी ग्रीन जोन के अंदर जा सकते हैं, वापस ब्लू जोन के अंदर आ सकते हैं। तो ये चीज फायदे होते हैं। एंड ग्रीन जोन के अंदर बेसिकली आपको प्रोजेक्ट्स की शोकेसिंग देखने को मिलती है। ब्लू जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो हाई लेवल सेगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, या एक तरीके से नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, या एक तरीके से प्लेनरी एक्शन बन रहा होता है। तो ये चीज होती है ग्रीन और ब्लू जोन के अंदर फर्क को। अब अगर हम बात करें कि UNFCCC का किस तरीके से चल रहा है,
सो राइट नाउ हमारे पास UNFCCC के अंदर दोनों जोन हैं, ग्रीन जोन भी है, ब्लू जोन भी है। ग्रीन जोन ओपन है आप कह लें ब्राजीलियन पीपल के लिए, और एक तरीके से जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन सिर्फ और सिर्फ ओपन है फॉर फार्मर्स, इंडिजिनियस पीपल, आपकी वुमेन हो गई, लेकिन वो वाले एक तरीके से पर्सन जो कि इन सेक्टर को भी हाईली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाईली इन्फ्लुएंशियल बॉडीज के ऊपर बैठे हुए हैं। इट इज ओपन फॉर ऑब्जर्वर डेलीगेट्स, पार्टी डेलीगेट्स। सो ये हमारे पास ब्लू जोन ओपन होता है। अभी तक जो हमारे पास प्रोग्रेस आ रही है, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिक्लेरेशंस पास हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं लॉस एंड डैमेज फंड की, तो लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हमारे पास पहले प्लान किया जा रहा था कि हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर टोटल अमाउंट जो रखेंगे इनिशियली वो $700 मिलियन की रखेंगे, लेकिन फिर लास्ट ईयर बात की गई थी कि हम लोग प्लान रखेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर अराउंड द मनी विल बी अराउंड 300 to 400 मिलियन डॉलर्स, USD की बात कर रहा हूं मैं। और अभी टिल नाउ बात की जा रही है कि लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर हम लोग रखेंगे अराउंड $250 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देंगे। ये होगी लॉस एंड डैमेज फंड की। अगर मैं बात करूं ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन की, तो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GGA, उसके ऊपर अभी हम लोग इनफॉर्मल नोट्स तक ही पहुंचे हैं। इनफॉर्मल नोट्स से मुराद ये चीज होती है कि वो बातें अभी टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं आ रही, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आप कहने एक दूसरे से बात की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट को ड्राफ्ट करना, उसके ऊपर हम नहीं पहुंचे। ये होते हैं इनफॉर्मल नोट्स। एंड बेसिकली यू हैव टू नो कि इनफॉर्मल नोट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट को ड्राफ्ट करना किस तरीके से होते हैं, एंड उस टेक्स्ट को ड्राफ्ट करके एक तरीके से पूरे के पूरे कंट्रीज से पास करवाना, ताकि ये हमारा एक गोल बने, ये हमारा एक एम बने टिल द नेक्स्ट कंट्री। ये एक अलग खेल होता है, ये एक अलग आपके स्किल होता है, जिसके लिए बेसिकली इफ यू आर गोइंग एट 8 AM इन द मॉर्निंग ब्लू जोन के अंदर, तो आपको एक चीज के ऊपर बात करते करते रात के 11 भी बज सकते हैं, उस चीज के ऊपर बात करते करते रात के 12 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से आपने उस चीज के ऊपर अपने स्टांस को रखना है, आपने उस चीज के ऊपर अपने स्टांस को और ज्यादा इंप्रूव करना है, ताकि कंट्रीज जो हैं बाकी के वो आपके साथ राजी हों कि ये कंट्री बिल्कुल ठीक कह रहा है, वी हैव टू मेक दिस गोल, वी हैव टू मेक दिस प्लेज टिल नेक्स्ट ईयर एंड वी कैन नॉट बैक डाउन फ्रॉम दिस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अभी हमारे पास मिस्टर साइमन स्टील है हमारे पास एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी जो है वो पेरिस एग्रीमेंट का हार्ट है। अब अगर हम ट्रांसपेरेंसी जो है के ऊपर बात करें, तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर उन्होंने दाद दी है 118 कंट्रीज को, जिन्होंने सबमिट करवाई है अपनी बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। हमारे पास एक तरीके से दो चीजें हैं जो कि हर कंट्री के ऊपर लागू है। एक तो एनडीसीज के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, एक है आपके कि उसने उस कंट्री ने अपनी कंट्रीब्यूट करना है ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट को, जीएसटी के ऊपर बात हम कर रहे होते हैं। और एक है हमारे पास कि उस कंट्री ने अपनी एक बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देनी है। बाईएनियल से मुराद है कि हर 2 साल के बाद एक रिपोर्ट देनी है, जिसके अंदर बेसिकली आप एक तरीके से अपने ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को बता रहे होते हो, आप अपने एक तरीके से एम्स को बता रहे होते हो कि कौन कौन से फुलफिल हो चुके हैं, कौन कौन से आप फुलफिल आगे करोगे, और 5 साल के अंदर अंदर किस आपकी जो पोजीशन है, जो कि आपने टारगेट प्लेज किए थे इन 5 सालों के अंदर आपने फुलफिल करने हैं, वो कहां तक आप पहुंचे हो। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का। और पाकिस्तान ने अपनी पहली बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पिछले साल पब्लिश करवा दी थी। तो कुडोस टू ऑल ऑफ यू। बट मेरा सवाल आप लोगों से एक ये भी है कि क्या हमारी जो बाईएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर पब्लिश करवाई है, क्या वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट भी है, या हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ी सी टेम्परिंग की थी। सो दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। इसके ऊपर सोचिएगा एंड इसके ऊपर आप लोग बात भी जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको वैसे बताऊं, तो भाई हमारे पास अभी के लिए 3 डिक्लेरेशन पास हो चुके हैं। डिक्लेरेशन हमारे पास वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर आगे जाके कल को हमारे गोल्स बन रहे होते हैं। तो 3 डिक्लेरेशन पास हो चुके हैं। उन 3 डिक्लेरेशन के ऊपर हम लोग आगे लाइक इन लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि अभी उसके ऊपर उनके साथ साथ भी बाकी डिक्लेरेशंस पास होंगे। एक कॉल नया आ चुका है कि जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि जितने भी कंट्रीज हैं अराउंड 52 स्टेट्स ने इसको पास ऑन कर लिया है उस कॉल को, एंड उसका नाम है कॉल टू एक्शन फॉर इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड आई जस्ट रोट इट डाउन वाइल्ड फायर रेजिलियंस। तो इस कॉल टू एक्शन इन IFM एंड वाइल्ड फायर रेजिलियंस के अंदर
हम लोग बेसिकली ये सब चीज़ों को देखेंगे। एंड उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम लोग वाइल्ड फायर से बचना चाहते हैं, 50 मेंबर्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, एंड वी हैव टू वर्क दिस थिंग। और इसके अंदर जो हमारे पास 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स के अलावा जो 2 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसके ऊपर लाइक इसके सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, वो है यूएनईपी और फाओ। एंड उन्होंने कहा है कि अगर हम इस चीज के ऊपर आईएफएम इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे तो ये हमारे पास डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए भी एक खास हमारा की रोल है। तो इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो टिल नाउ कुछ हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ये वाली कॉप जिसे समझा जा रहा था कि ये 30 साल के बाद आ रही है और वहीं पे आ रही है जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे कॉप्स की शुरुआत हुई थी ब्राजील के अंदर, ये एक सक्सेस साबित होने को जा रही थी। तो ये क्या सक्सेस साबित होगी भी या नहीं, तो ये चीज़ है। तो इसके ऊपर डिफरेंट लोगों का डिफरेंट टेक है। कुछ हमारे पास फॉर्मल बॉडीज का टेक है, मतलब कि जिन्होंने यूएन को फॉर्मली रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास कॉप्स ऐसी कॉप्स बन चुकी हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, लाइक दे आर नॉट फिट फॉर अ पर्पस। एंड कुछ का स्टांस ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस को मीट डाउन करेंगी। एंड इफ आई हैव टू से एनीथिंग एल्स तो एडेप्टेशन के ऊपर बात होगी, जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था आज के लिए। एक हमारे पास इस कॉल के ऊपर बात होगी वाइल्ड फायर मैनेजमेंट के ऊपर, एक हमारे पास इस लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात होगी। एंड यस, दिस इज द इट। एंड यूएनईसी हमारे पास एक इदारा है जिसके ऊपर वो अभी काम कर रहा है इस COP30 के अंदर भी। एंड उन्होंने फोकस किया हुआ है 2 चीज़ों को। उन्होंने वो फोकस किया हुआ है वाटर कॉर्पोरेशन के ऊपर, और उन्होंने फोकस किया हुआ है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। एंड आई गेस आज का हमारे पास जो आज का दिन होगा लास्टली, वो जैसे ही शाम तक पहुंचेगा, कल की सुबह तक, तो हमारा कॉप का पहला पहला वीक कंक्लूड हो जाएगा। एंड देन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचेंगे। संडे को रेस्ट डे है, संडे को छुट्टी है कॉप के लिए। सो दिस इज इट। एंड आई गेस जैसे जैसे हमारे पास न्यूज आती जाएगी तो हम इसके ऊपर बात मजीद करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं एक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स की, तो हमारे पास कॉप के अंदर डिफरेंट एक्टर्स होते हैं। हमारे पास यूथ बॉडीज हैं, यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशंस हैं, नेशंस की मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज के अलावा आप एक तरीके से कह लें कि उनकी एनजीओ सेक्टर है, उनके हमारे पास इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अंदर हमारे पास यूएन की एजेंसीज आ जाती हैं, हमारे पास IUCN आ जाती है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, हमारे पास कुछ फिर यूएन के उन बॉडीज से आते हैं जो कि एग्रीमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। फिर हमारे पास जिस तरीके से UNEA है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली, हमारे पास उसके भी कुछ बंदे आते हैं इन कॉप्स के अंदर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बिजनेस सेक्टर इन्वॉल्व होता है, हमारे पास एकेडमिया से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोफेसर आते हैं जो कि टॉक्स वगैरह देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, हमारे पास यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स भी आते हैं एज द फॉर्म डेलीगेट्स। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे पास फार्मर्स का तबका आता है, हमारे पास विमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है कॉप के अंदर। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिजनेस सेक्टर आता है, फार्मर्स आते हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हाईली इन्फ्लुएंशियल चीज होती है वो होती है आपके इंडिजिनियस पीपल। आपके इंडिजीनियस पीपल से भी लोग आते हैं जो कि सालों से काम कर रहे होते हैं उस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के अंदर, एंड दे यूजुअली कम टू रिप्रेजेंट देयर कम्युनिटीज। सो दिस इज इट। आई गेस कि मैंने थोड़ा सा जो कि आपके व्यू पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझाया तो प्लीज लेट मी नो, एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग UNFCCC आज के दिन। एंड देन आई गेस कल मैं आप लोगों को मिलूंगा फॉर द ट्रेनिंग सेशन 3 जो कि मैं खुद कंडक्ट करवाऊंगा, और हम लोग बात करेंगे थीमेटिक एरियाज के ऊपर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस ऑन द UNFCCC का फ्रेमवर्क। आप सवाल पूछ सकते हैं अभी तक जो हमारे पास काम हो चुका है UNFCCC के अंदर COP30 के मुतल्लिक। और कॉन्ग्रेचुलेशंस के COP32 के अंदर लेट्स सपोज कि नेक्स्ट ईयर की जो कॉप है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी, एंड बाय एनी मीन्स हम नहीं जा सकते। तो COP32 के अंदर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कॉन्टेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि COP32 हमारे पास होगी इथियोपिया के अंदर। इथियोपिया के अंदर हमारे पास अफ्रीकन कॉप होगी, एंड इथियोपिया इज वी कैन गो टू इथियोपिया इन लाइक वो थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा तो नहीं बट इट्स लाइक सॉर्ट चीप
फ्लाइट्स हमारे पास होती हैं. तो वी कैन गो टू इथियोपिया, वी कैन रिप्रेजेंट आवर स्टेट, वी कैन रिप्रेजेंट आवर कंट्री इफ वी कैन नॉट गो टू तुर्की और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी. सो दिस इज इट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर जर्नी. आप लोगों को अगर कॉप फॉलो करनी है तो न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ें, आप लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करें डिफरेंट पर्सन्स को. डिफरेंट पर्सन्स को फॉलो नहीं कर सकते तो यूएन की आप एक तरीके से बॉडीज को फॉलो कर लें, क्योंकि यूएन की बॉडीज भी आपको एक तरीके से अपने मुतल्लिक बताती जाएगी. और यूएन की बॉडीज के अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस अगर हैं तो उनको फॉलो कर लें जो कि आपको बताएं. मैंने वैसे बहुत ही कम पेजेस को फॉलो किया हुआ है. यू कैन फॉलो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पेज, आप यूएनडीआरआर के पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप यूएनएफसीसीसी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप यूएनसीसीडी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूएनसीबीडी की पेज को फॉलो कर सकते हैं. तो ये हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. चाहे आपका लिंक्डइन हो गया, उनका उनका इंस्टाग्राम हो गया, एंड उनकी उनके पेज पे जाके आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएन ने, उस यूएन बॉडी ने इजाजत दी है कि आप आगे आने वाली लाइक मीटिंग्स के अंदर अपने डेलीगेट्स को भेज सकते हैं. तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखकर, उन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट पे जाके, उन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स के फोकल पर्सन्स को जाकर ईमेल कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, दिस इज माय लिंक्डइन, आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस दिस ईयर, I have this much experience, you can check my LinkedIn, my progress. क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी लिंक्डइन देखती हैं, आपकी सीवी देखती हैं, एंड जब उनको लगता है कि यार ये बंदा या ये जो हमारे पास लेडी है वो अच्छा काम कर रही है, सो दे रियली गिव यू द बैज, ताकि आपकी वो, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है थ्रू यू. सो दिस इज इट. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बट यस यू कैन बी अ पार्ट, यू कैन गो. कॉमसेट्स इस्लामाबाद आपको देते हैं आपके लिए पार्टी बैजेस तो नहीं, ऑब्जर्वर डेलीगेट्स के बैजेस देते हैं. सो कॉमसेट्स इस्लामाबाद के अगर आपने जाना हो तो कॉप यूएनएफसीसीसी की कॉप के अंदर जाना हो तो यूएनएफसीसीसी की कॉप के अंदर आपको कॉमसेट्स दे देता है बैजेस, लेकिन बाकी कॉप्स के अंदर कॉमसेट्स मेरे ख्याल से नहीं देता. आई गेस आई प्रीटी मच समराइज्ड कि किस तरीके से यूएनएफसीसीसी का फ्रेमवर्क, लाइक किस तरीके से हमारे पास कॉप 29 या कॉप का फ्रेमवर्क होता है, एंड हाउ मच स्टेक होल्डर्स, हाउ मेनी एक्टर्स आर देयर, एंड एक तरीके से पूरे 10 या 11 दिन के अंदर हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं. यू गेट टू सी अप्रॉक्सीमेटली around 100,000 to 130,000 people in these 10 to 12 days जो हमारे पास एक्चुअल डेटा आता है. सो अभी भी अगर कोई सवाल है, सवाल करिए. आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस मीटिंग. सवालात करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज आप लोगों का फायदा होगा, एंड सवालात करने से घबराइएगा मत. It's our job to answer your question. It's our job to guide you so that you can represent the nation. Thank you so much, Miss Maliha. Thank you so much. The pleasure is all mine. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So sorry. अच्छा, so मैं कुछ कहने लगा था. Let me just recall what was the thing that I was about to say. I guess I forgot. अगर कुछ होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर दूंगा. कल का दिन जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ओह सॉरी, या देयर आर अ लॉट ऑफ डोमेन्स जिसके अंदर आप जा सकते हैं. एनवायरनमेंट के अंदर आप एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं, आप जेंडर सेक्टर को देख सकते हैं, आप गवर्नेंस सेक्टर को देख सकते हैं, आप अडेप्टेशन की साइड पे जा सकते हैं, मिटिगेशन की साइड पे जा सकते हैं, आप एक तरीके से ग्लोबल स्टॉक टेक वाली साइड पे जा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट की साइड पे जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज की साइड पे जा सकते हैं, आप फूड सिक्योरिटी की साइड पे जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर सिस्टम्स की साइड पे जा सकते हैं.
आप कह लें आप हेल्थ की साइड पे जा सकते हैं, एजुकेशन की साइड पे जा सकते हैं. देयर आर अराउंड 35-36 डोमेन्स ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे आप जा सकते हैं. 36 डोमेन के अंदर एक इंसान नहीं जा सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. लाइक छोटी छोटी नॉलेज रखना तो पॉसिबल है, बट एक तरीके से ज्यादा नॉलेज रखना पॉसिबल नहीं है. I would highly suggest all of you are in your youth age, you have still time. मैक्सिमम 4 डोमेन्स को पकड़ लें इन 35-33 एक तरीके से डोमेन्स में से, और उन 3 से 4 डोमेन्स के ऊपर अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि अगर कल को कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको टच करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने इन 4 डोमेन्स के ऊपर, अपने इन 3 डोमेन्स के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत रखेंगे, तो तब जाकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस इवेंट के अंदर, उस प्लेनरी सेशन या हाई लेवल सेगमेंट के अंदर, ताकि आपका स्पार्क लूज ना हो, बिकॉज यू आर स्टिल एट द यूथ एज एंड आई डोंट वांट कि जो फ्यूचर लीडर्स होते हैं उनका स्पार्क लूज हो, बिकॉज आई जस्ट went through this thing. I used to get my things at each and every domain. मैं किसी भी डोमेन में चला जाता था. So in my initial आप कह लें working days, I lost my spark and it was very difficult for me to get back. But after getting the opportunity to present Pakistan at the UNFCCC, I finally realized. तो अपने जो आपकी जो डोमेन्स होती हैं इनको शॉर्टन अप कर लें, 3 to 4 डोमेन्स को तक रखें, अपने आप को महदूद रखें. उन 3 to 4 डोमेन्स के ऊपर अपनी नॉलेज को आप कह रहे हैं मजबूत कर लें. मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी डोमेन्स को मत देखें, बाकी डोमेन्स को भी देखें, नो हाउ होनी चाहिए इंसान को, लेकिन अपनी ग्रिप को उन 3 to 4 डोमेन्स तक ऐसे कह लें कि बहुत ही मजबूत कर लें, कि वो जो कल को कोई पर्सन भी पूछे आपसे, तो आपको उन 3 to 4 डोमेन्स के ऊपर अपनी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उससे फौरन से बता सके कि ये वाला पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसका एक दूसरा नजरिया है. यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरीके से देखा जा रहा है, अफ्रीकन बॉडी के अंदर इस तरीके से देखा जा रहा है, हमारे पास यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, अमेरिका के अंदर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, चाइना इस तरीके से ट्रीट कर रहा है. सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस थिंग, क्योंकि आप उस डोमेन को पाकिस्तान के लेवल तक नहीं देख रहे, आप उसको ग्लोबली देख रहे हो. सो फिर हमारे पास बहुत सारा नॉलेज आ जाता है. सो दिस इज इट. शॉर्टन योर डोमेन्स, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग इन ए लूप ऑफ 3 to 4 डोमेन्स, ताकि आपका वो जो लूप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड आपके पास स्ट्रेंथ आ जाए उन 3 to 4 डोमेन्स के ऊपर. कहेंगे तो आई कैन शेयर यू द थीमेटिक एरियाज, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे थीमेटिक एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं. और this is it. Looking forward to seeing you all tomorrow for the third session, and उसके बाद हमारे पास 3 sessions रह जाएंगे. And yes, if everything goes well, तो we will have a session on Wednesday as well, coming Wednesday के अंदर, जिसके अंदर छोटा सा session होगा. It will be hardly of 45 to 1 hour, जिसके अंदर we will really talk on how a youth delegate can represent the nation or the organization at a simulation, ताकि जो आपका संडे को कंपटीशन होगा एंड उसके अंदर डॉक्टर नज़ाकत भी हमारे साथ होंगे, सो ही कैन आल्सो गाइड यू एज वेल. एंड उस कंपटीशन से पहले यू कैन प्रिपेयर योर थिंग्स एज वेल. एंड ऑन वेडनेसडे आई विल बी गिविंग यू द टॉपिक ऑन कि किसके ऊपर आप लोग बात करेंगे ऑन सैटरडे. सो इट विल बी जस्ट सॉर्ट लाइक अ कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, बट इट विल बी अ प्रैक्टिस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, कि इस तरीके से एक कॉप की सिमुलेशन या इस तरीके से एक कॉप की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी गहमा गहमी होती है कि आपको रात के 11-2 बजे तक भी रहना पड़ता है वहाँ पे. तो ये क्यों रहना पड़ता है, किस वजह से रहना पड़ता है, तो आपको उसका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस तरीके से रहना पड़ता है, इस तरीके से डीलिंग होती है हमारे पास. So this is it. Thank you so much for joining today's session. Looking forward to seeing you all tomorrow. कोई सवाल होगा तो ज़रूर करिएगा मेरे से at my WhatsApp, or you can even ask me tomorrow. Looking forward to seeing you all tomorrow. खुदा हाफिज़, शब खैर and good night. अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. खुदा ताला की अमान में. शुक्रिया.